Hi friends, welcome back. Here in this video, I am going to solve one question related to centroid or center of gravity. This question is very helpful for 11th class, 12th class students and students who are pursuing in BTech in mechanical engineering and mechanical discipline pursuing for diploma courses. So let's continue. Question says, find the CG of an angle section 100 mm multiplied by 60 mm by 20 mm. So the angle section is given here. I have drawn the figure. This is what angle section 100 mm and 60 mm and its thickness is 20 mm is given. So we have to find the centroid. To find the centroid, first of all, I would like to take a reference axis. So see, if reference axis is taken in such a way that the whole figure or the given figure, at least it capture in a one quadrant. If I am taking this as a y-axis and this as x-axis, then the whole figure is captured in xy plane, in first quadrant xy plane. So we have already taken this as an y-axis and this as an x-axis. To find the CG means what? Centroid or center of gravity. It is a point. Centroid is a point where whole area of the figure is supposed to concentrated at a single point. So the single point must have to find here for the question. It means to find the point, to locate the point, we must have a two dimension, or in a coordinate geometry we have already read, to designate a point we must have a two coordinate. One is x coordinate and there is y coordinate. So here in case of a CG, to find the CG centroid, it means what? We have to find the point where the whole area is supposed to concentrate. This would have a two coordinate. One is x coordinate, another is y coordinate. So we have a formula to we will utilize here: a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus whole divided by a1 plus a2 plus a3 plus or we can say summation of a into x upon summation of a. Similarly, y coordinate is nothing but y bar is equals to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 plus whole divided by a1 plus a2 plus a3 plus In case of it is already written, it can be written in the form of summation of a into y divided by summation of a. So therefore the centroid or CG of the given figure will be G x bar y bar. Okay, so G notify for center of gravity or centroid, and xy and y bar with the coordinate for the centroidal point from y-axis and x-axis correspondingly. So we have already taken x-axis and y-axis as a reference axis, and whole picture is supposed to lie in first quadrant, or the whole figure is captured in one plane, xy plane. So now secondly, we have to divide the whole figure into small section. Here, what is a1, what is a2, what is a3? These all are the sections, area of the corresponding section. So we are taking here this angle into two section. One I am taking as this part is the first section and this rectangular part is the second section. So let us say this is what first section and this is what second section. So we have two sections here. In first section, if we are considering first section, then suppose G is located for the first section is here. Let's suppose G. So we can say this point is the centroid for this section 1. So for section 1, we must have a1, we must have x1, we must have y1. a1,
for first section, this is what rectangular lamina we can say, which is having length and width. So we have width 20, but length it is given in mm. So length is not 100 mm. Why? Because this portion is of second section, so we have to take only up to this much length. So if I am subtracting 20, this portion 20 from 100, so we can take 100 means what? 100 minus 20 multiplied by 20. This is what? 80 multiplied by 20. Now x1 is nothing but the location or distance of centroid of section 1 from y-axis. So this is the centroid for section 1. So distance from y-axis is nothing but this much. So for rectangular portion, 20 is the width. So 50% of 20, that would be equals to 20 divided by 2, means 10 mm. And y1 means what? Coordinate of this virtual or imaginary centroid from x-axis. So this is what axis. From here, what will be the distance? This is what the centroid. So this is what? y1 distance. y1. To find y1, we must have to cross this point 20. Okay, so 20 plus up to this. This is what? 80 distance. 80. And for rectangular, this portion is located at a 50% distance, means 80 upon 2, 40. So we can say 80 upon 2. So 20 plus this is 40 is nothing but 60. We have a1, we have x1, we have y1. Now to find a2, x2, y2 for section 2, let's proceed here. For section 2, a2, x2, y2. Now a2 means what? Area for the section. This is what? Also rectangular portion. So 60 length and 20 width. So 60 multiplied by 20. Now x2 is nothing but the, let's suppose first of all we are choosing here this point is the centroid for this section 2. So x coordinate is nothing but distance from y-axis. So what would be the distance from this y-axis is 60 and it's 50%, that is 30. So 30 would be the x2 value. So 60 upon 2, that is 30. Now y2 is nothing but the distance from x-axis. So x-axis is here. What would be the distance from here? So it is 20 and 50% of 20, that is 10. So we can say 20 divided by 2, that is 10. We have all the data corresponding to section 1 and corresponding to section 2. Now putting the value to evaluate x bar by bar. So we have x bar equals to, since we have already two sections, so we can say a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. Put the corresponding value. A1 is nothing but 80 into 20 into x1 is 10 plus a2 is nothing but 60 into 20 into x2 is 30 divided by a1 plus a2. A1 is 80 plus 80 multiplied by 20 plus a2 is 60 into 20. What would be the value? I am calculating with the help of calculator. So I have 80 into 20 into 10 plus 60 into 20 into 30 divided by 80 into 20 plus 60 into 20. That is 18.57 and now y bar is a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. A1 is nothing but here 80 into 20 multiplied by y1. y1 we have 60 plus a2 is nothing but 60 into 20,
y2 is 10 divided by a1 80 into 20 plus a2 60 into 20, which is equals to 10 and this data is 60. So 60 80, this value is 38.57. so we have 60 and okay, now this data is 38.57 and this is what distance, so it is in mm, this would also be in mm, therefore CG of given angle section is G of coordinate x bar is nothing but 18.57 and y bar is 38.57. This is your answer. See, question is saying angle section is given and we have to locate the centroid of this angle section. So first of all we have chosen a reference point, reference axis as x-axis and y-axis. Now the axis chosen in such a way that the whole figure is at least captured in one plane, at least one plane. Okay, if it is not possible then it doesn't matter, but to simplify to evaluate the value of CG in simple way, बहुत ही आसान तरीके से अगर हम सेंट्रॉइड की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि द गिवन फिगर मस्ट लाई इन अ वन प्लेन. तो इस तरह से आप एक्सिस को चूज कीजिए इन सच अ वे दैट द होल फिगर इज कैप्चर्ड इन एक्स वाई प्लेन और एनी वन प्लेन. ठीक है, सो ये आपका पहला काम हो गया. दूसरा काम होता है कि वी हैव टू डिवाइड द गिवन फिगर इनटू स्मॉल सेगमेंट. नाउ कम से कम सेगमेंट हम चूज करें, कम से कम सेक्शन लें. ये जो पूरे फिगर है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा सो दैट कि हर एक सेक्शन के लिए एक एरिया A1 एरिया x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हर एक सेक्शन के लिए हमको इवेल्युएट करना आसान हो जाए. उसके बाद तो हमने क्या किया, इसको दो टुकड़े में डिवाइड कर दिए हैं. ये आपका पूरा का पूरा एंगल है. सो ये आपका फर्स्ट, इस तरह से हम सेक्शन को चूज किया ताकि दिस इज फर्स्ट सेक्शन एंड दिस इज सेकंड टुकड़ा. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन निकल गया, ये भी रेक्टेंगुलर शेप. सेकंड जो आपका पोर्शन मिला ये भी आपका रेक्टेंगुलर शेप. ना किसी एक रेक्टेंगल के लिए अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल के लिए जो आपका सेंट्रॉइड होता है, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल मान लेते हैं कि इसका लेंथ आपका L है और आपका विड्थ B है. अगर इसको हम एक्सिस शूट कर लें y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट x एक्सिस, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ से है ना, डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वही आपका सेंट्रॉइड होता है G पॉइंट. तो डायगोनल्स का जो लोकेशन होगा, ये आपका G का सेंट्रॉइड का जो लोकेशन होगा यहाँ से 50% L/2 पर होगा और फ्रॉम x एक्सिस से भी 50% यानी B/2 होगा. तो L/2 यहाँ से L/2 और इधर से B/2 डिस्टेंस. तो इसी तरीके से हमने इस सेक्शन के लिए बात करता हूँ. तो जब हमारे पास ये सेक्शन है तो ये सेक्शन का क्या होगा, इस जगह से ये आपका 20 है फर्स्ट पोर्शन के लिए, तो 50% तो 20/2 और इधर से कितना डिस्टेंस होगा, ये आपका 80 है टोटल, तो 80/2 होगा. बट अगर एक्सिस यहाँ रहता तब यहाँ से 80, लेकिन एक्सिस तो हमारा 20 mm डिस्टेंस नीचे है, तो इस पोर्शन को हमने क्या किया, 20 को हम ऐड कर दिए हैं. यही हमारे पास फर्स्ट सेक्शन के लिए डेटा है कि A1 हमारे पास 80 × 20 लेंथ इंटू विड्थ है और x1 y एक्सिस से डिस्टेंस, y1 x एक्सिस से डिस्टेंस. तो ये हमारे पास निकल गया फर्स्ट सेक्शन के लिए डेटा. सेकंड सेक्शन के लिए भी डेटा उसी तरह से A2 x2 y2. A2 की वैल्यू यानी ये आपका सेकंड सेक्शन हो गया, ये भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो 50% फ्रॉम x एक्सिस, 50% फ्रॉम एक एंड से और 50% फ्रॉम अनदर एंड से.
तो यह भी हमने निकाल लिया वैल्यू। नाउ वी हैव द फॉर्मूला a1 x1 plus a2 x2 ये डिफरेंट, हाउ मेनी पोर्शंस आर देयर, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, हियर वी हैव ऑलरेडी टेकन 2 sections, so a1 x1 plus a2 x2 divided by 1 plus a2, put the corresponding data, here we have already obtained, so हमने obtain कर लिया 18.57 mm distance of CG from y axis, and for y bar, that is the distance from x axis, is we have already obtained 38.57 mm. So CG, now where it is located, see अगर हम x एक्सिस चूज किए हैं y एक्सिस इस तरह से, तो x बार गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सो 18.57, सी 20 है तो 18.57 बहुत ही नज़दीक होगा। तो यह आपका जो है ना सेक्शन आ गया कितना, 20 है पूरा, तो ये करीब करीब ये है आपका 18.57 का। यहाँ से डिस्टेंस आपका कितना है 18.57, और y एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस 38.57। सी तो अगर हम बात करते हैं 50, यहाँ से 100 है ये, ठीक है, तो 100 होगा तो 50 करीब करीब आधा हो गया यहाँ, और थोड़ा सा नीचे, यानी कह सकता हूँ कि इसी एक्सिस पर करीब करीब इस जगह पर आपका क्या है, सेंट्रॉइड है। इस पूरे एंगल सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ है, ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 18.57 एंड 38.57. This is the G for this angle section. Okay, G may lie inside the body, G may lie outside the body. ठीक है, it doesn't matter, कहीं पर भी lie कर सकता है, inside भी lie कर सकता है, outside भी lie कर सकता है, depending upon the value given and the thickness. These all parameters इस पर वो डिपेंड करता है। Now सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जिसे मैंने सॉल्व किया, फाइंड द CG ऑफ द एंगल सेक्शन गिवन 100 mm बाय 60 mm बाय 20 mm एंड द एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडर, आप जो है ना बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो एट द एंड, इफ यू फाइंड माई वीडियो वेरी हेल्पफुल, सो लाइक, कमेंट एंड शेयर among your friends and family also. Thank you for watching my video.